Hey guys, good evening. I hope everybody is doing well. और आप सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो और ऐप को डाउनलोड कर रहे हो। अगर आपको नाइन्थ के की क्वेश्चंस चाहिए, उसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। दीज क्वेश्चंस विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जामिनेशन। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आपके फिजिक्स के इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस, दे विल आल्सो बी अपलोडेड सून. Okay, so we've reached today class 9 physics. We are doing motion and we have reached today lecture number 6, non-uniform motion and acceleration. This is what we are going to do today, right? So I hope everybody is ready with their pencils and copies, notebooks, and we are going to start with our lecture number 6. Now we've already studied about speed, we've studied about velocity, we've also studied about distance and displacement. So let's go and study about today uniform motion. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? अगर एक बॉडी मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, चाहे वो इंटरवल्स कितने भी छोटे हो, उसको हम बुलाते हैं यूनिफॉर्म मोशन. So when we're talking of uniform motion is the motion of a body, or motion of a body is said to be uniform if the body covers equal distances in equal intervals of time. That is uniform motion. So when we're talking of real life, जो bodies in uniform motion होती हैं, they are very rare. बहुत ही कम ऐसी बॉडीज हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन में होती हैं. तो इसका मतलब जो बॉडीज है प्रैक्टिकली दे आर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? नाउ जब भी बॉडी मूव नहीं कर रही विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसकी मोशन को हम क्या बुलाते हैं? दैट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब कोई भी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो व्हाट आर द कंडीशंस? या तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए, सो इट इज चेंजिंग इट्स स्पीड while it is moving in the same direction, या उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए और स्पीड सेम होनी चाहिए, तब भी जो मोशन होगी दैट इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म. और तीसरा, दोनों ही चेंज हो रही हैं, स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है साइमल्टेनियसली, देन ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? नाउ इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दैट इज चेंजिंग, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं? वी आर looking over here at speed and we are at the same time looking over here at direction. Okay, so non-uniform motion with respect to direction, so we're talking of, in other words, we are talking of velocity over here. Now the question that comes to our mind, which physical quantity determines how fast the velocity is changing? तो अभी तक हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था या कितना डिस्टेंस कवर हो रहा था in specific time that we were discussing with respect to speed, and we were discussing with respect to velocity. Now over here we are saying that which physical quantity determines how fast the velocity is changing, that is known as acceleration. क्या बुला रहे हैं हम उसको? हम उसको बुला रहे हैं acceleration. Right? So acceleration of a body is the change in velocity of the body per unit time. That is what acceleration is. Okay, so if you're taking over here, let's say we are taking the velocity of a car, which is u at any instant of time. So u yahan pe we are taking u as the initial velocity, right? So u over here is the initial velocity. Let's say the time over here, that is t1. Okay, and then it is moving, and at time t2 we are saying that it reaches a final velocity, which is v. Then what is acceleration? Acceleration is equal to v minus u, that is final velocity minus initial velocity,
per unit time or divided by time. So this acceleration, this is known as average acceleration. ये जो हम फॉर्मूला दे रहे हैं, ये फॉर्मूला हम दे रहे हैं एवरेज acceleration, right? So this is average acceleration. Now the instantaneous acceleration that can be found by the same procedure that we used to calculate the instantaneous velocity in our previous lesson or our previous lecture. So जिन्होंने वो lecture नहीं देखा है, please उसको देख लो, so that you know how to calculate the average velocity. Although we did speak of the fact कि जो average velocity होती है, that is not very accurately, we cannot determine it. Now over here we are focusing in this chapter on a body which is moving in a straight line with uniform acceleration, right? So in such case we can say that for uniform acceleration, average acceleration that is equal to, ये equal to का sign मैंने लगाया है, that is equal to instantaneous acceleration. Now what are going to be the units of acceleration when we are talking of units? Now this is velocity, change in velocity per unit time. तो change in velocity अगर हम लोग कर रहे हैं तो velocity का यूनिट आ गया meters per second और टाइम का यूनिट आ गया second. Therefore the SI unit of this would be meters per second square, and the CGS unit will be centimeters per second square, right? So we've just taken up an equation over here. The equation is acceleration is equal to V minus U upon T. तो इसका equation का हम analysis देखते हैं, right? So over here when a body is moving in a straight line without reversing the direction, number one, ऊपर वाला equation हमें क्या बोलता है? If V is greater than U, then in that case, as acceleration is also a vector quantity, so A is, or acceleration is positive. Okay, so we say that if final velocity is greater than initial velocity, or if the velocity is increasing with time, the value of acceleration that is going to be positive. Let's look at the second case over here. So moving on to the second case, if V is less than U, in that case acceleration is going to be negative. So which means कि अगर final velocity जो है वो कम है than initial velocity, or in other words velocity is decreasing with time, the value of acceleration that is negative, right? अब इसको जो negative acceleration होती है, this is known as retardation. Or it is also known as deceleration. Right? So negative acceleration, that will be known as deceleration. If the acceleration that is having a value of -2 meters per second square, तो acceleration negative आ रही है, तो बच्चे रिटार्डेशन की वैल्यू क्या आएगी? रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 meters per second square. This is going to be the value of retardation. Okay. Now, third condition हमारे पास क्या आ जाती है? अगर दोनों same है, that is V is equal to U, then definitely in that case, the value of acceleration that is equal to 0. So acceleration is 0 when the final velocity is equal to the initial
velocity. Clear? Now over here, अगर suppose हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी किसी भी चीज की कैलकुलेट करनी है, राइट? सो एवरेज वेलोसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज v एवरेज दैट इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2. This can be only used when the motion is uniform or motion is uniformly accelerated. Motion is uniformly accelerated, right? So it is not used in any other case. यहीं पे हम लोग उसको यूज कर पाएंगे जब हम लोग बोल रहे हैं कि मोशन जो है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, राइट? सो आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं. नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू कवर एट लीस्ट 10 questions in that regarding acceleration, speed and velocity. तो उस वाले लेक्चर को आपने 100% देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है. इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर जो है मोशन, दिस इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, राइट? देन आई एम गोइंग टू डू इन दिस अ सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं. So this I am going to take a special lecture in which we are going to discuss about different types of graphs and their uses, right? क्योंकि एक्टिविटी वाले में आपको फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो हैं या केस स्टडी वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट में 10 क्वेश्चंस, उससे नेक्स्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ्स. सो यू गाइज बी रेडी.